mention, but तुम लोग उसके पहले ही उठ गए तो ठीक है. Good to know. Good to know. Thank you. Sorry, I know I made you guys move, and now your neck might hurt. I'm really sorry. Thank you guys. Thank you. Can we occupy as much as possible? इतना आ जाओ इधर आ जाओ. इस second row में भी खाली यहाँ पे. Wonderful. Wonderful. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Welcome to today's Poetry Open Mic. My name is Harsh. I'll be your host for the afternoon. I'm so excited to have you guys here. You guys show no excitement whatsoever. It's fine. Oh, bus. Okay. Guys, आज वो Sunday नहीं है when I'm interested in PT claps. There are some Sundays, huh? I'll let you know. Today is not that Sunday. I'm just happy to be here. I'm very tired. Oh, God. Did anyone go out last night? Did you go out? Where did you go out? Okay, cafe. You went out? For a Harsh Gujral show. There's a Harsh Gujral show. How, was it in one of the malls? Show, it was a concert. Concert? That amount of people. Oh. Was it in a mall or was it in a venue? It was at the mall. Okay. Was it the first time you saw him? Yeah. Do you like him? Yeah. He's not going to watch the live stream, so I really don't think. Okay, cool. You can say no. It's fine. Sure, no? Yes, I liked. Okay, cool. Did you also go? Okay. Anyone else went out? Did something? None of you went out? Yeah, you went out? Great. Dinner? Okay. Nice, dude. Very sober people have come here. Nice. Yeah, you guys look very awake for a Sunday, dude. Usually you should see people. And also, we don't start. 2:15 is when we start thinking कि चालू करे क्या अभी? लोग आने लग गए, things like that. But today, everyone's there. Nice, good to know. I was very tired. Yeah, I didn't, we've been working a lot. I work at Habitat, so I've been working a lot every day. So yesterday I thought I'll, blow some steam. And also we had one of our poets, I don't know if you know him, his name is Arsh Malhotra. He had his solo show here yesterday. So it was like, it's first show, so we had to celebrate because, I really enjoy just like how we think of an idea for an art, to create an art, and then when you finish it, that joy you get was that for someone else. But I felt intensely happy that he's doing this, and so many people are. So I was like, let's blow some steam, and then forgot. Oh wow! I just spoke about you. I just told people that it was a show, and I don't know how you're awake. Okay. Cool. Okay. I see a lot of your first-time performers. So I'll just give you a small, rule कि क्या होता है, कैसा होता है. You will all get 4 minutes, okay? And how you'll know you have 4 minutes is you can see that timer there. It's running right now. So you'll have 4 minutes for each person. You can choose to perform 2 pieces, 4 pieces, or 10 pieces if you want to, but please stick to 4 minutes, right? We have a long lineup. We have a show after this. And like I told you, I was blowing some steam off, so please... Yes. Okay, let's be in this together. Okay, so that light will be flashed to you right now. If you look behind, that light will be flashed to you at 3 minutes 30 seconds. That means you have 30 more seconds to finish a piece. Okay, please be mindful. Because minute people start see the light, they're like, oh, so my new piece is actually about this subject, and then gone another 4 minutes, right? And then it becomes difficult because people towards the end will only get like a minute or two, and that's not fair because you got ready, you woke up, you came from some part of Bombay, right? And it should not be like you came here for a minute. If you traveled, so much, and then so let's just be mindful, okay? Second, have fun. Like I told, you come from different spheres, different spectrums of life, feeling different things. Have fun. If it's your first time or not a first time, have fun. I feel like this space is created to encourage this kind of medium, and you came here for a reason, right? To express what you have to say. So say it, and people will listen to you. If it's your first time, say it's your first time. People are very nice. They think they like encouraging. So even if it's not your first time, it's your first time. People are like, "Wow, you're doing this! Wow, I fucking support you!" Right? Because Bombay is like this. It's beautiful. So say it's first time if you feel very nervous, and if it's not your first time, also just say it. Okay, people be nice. Fourth, if you have a trigger warning, okay, if you have a trigger warning, give it. How many of you are working after this today? Every time, man. Every time this happens. Every week I say who's working, and one person from my team only is like, this is a bad reality check. To start the day, I know I have so much work. Okay, apart from both of us, who else is working from here, from you guys? Nobody? Okay, you're working after this? Both of you work, okay. So let's not ruin someone's day.
So give trigger warning, okay? Because people have a life and they want to go out and do things. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा दिन फिर it's like shit क्या बोल दिया उसने. So be mindful about other people and what they're saying, okay? Apart from that, you snap, cheer, you can say wah, do all of that. But don't do it while they're performing. Wait for a while, let them finish and all that. वरना वो, yeah, you know. What else is there? We are live streaming this. Sorry, I have something in my mouth. Okay, sorry. We are live streaming this. For those of you who don't know, we have a channel called Habitat Studios. Okay, we live stream the whole event using 3 cameras, and it'll be on YouTube. So whenever the event gets over, you can take the video off YouTube and you can use it on your social media. But for the love of God, please give credit. It's weird. Credit is like money. It's like my money. I'm giving it to you, and now I want to ask my money back, but I'm feeling weird asking it back. So it's just better if you do it instead of me, like, yeah, doing that conversation. Because it happens every time we have to have a conversation. And it's just like, oh, you remember that day? Remember you came for an open mic? They're like, yeah. Remember there were 3 cameras? They're like, yeah. Remember someone was sitting at the laptop? They're like, yeah. I'm like, so what about it? They're like, what about it? And I was like, man, don't do this to us. Okay, so please credit. And this is not just for us. I'm saying whoever in life. If anyone's shooting a video, if anyone's helping you do any work, please give credit because you don't know how they might find work or how they might land up, doing things in life further on. So please do that. Photos you will get in your DM from Habitat to your DM in a week. Okay, maybe it might take upar niche ek do din. Please be mindful. We're trying. We have too many events in a day, and we're really trying to get the photos. But sabke photos will be clicked and will be sent to you. Okay, that's it. Too much of rules done. Okay. Now, how many of you are here for the first time? Give me a cheer. No. Raising hand all. Raising hand doesn't work. There are only 4 names here. 12 people are shouting. So I really don't know if my math is not right or this room is just... Who are the 4 people whose first time it actually is? Okay. For the first time over here or first time in life or first... In life? So what brings you here today, like specifically? Did you ever think of doing it before? I thought for Yeah. multiple times. I never had the courage to. Just Okay. happened and I was like, let's do it. Okay. And how did you... have you come here before? Have you seen someone... I've come here for performances. I've never performed. Okay. For poetry shows itself? Okay. Whose show do you remember? Long back. Okay. Fair enough. Second time? Okay. First time. Aaj, what made you be like, Aaj, I want to share this? कितने टाइम से लिख रहे हो? 8 years. हाँ तो परफॉर्म आपने कभी किया ही नहीं है पोएम्स? अच्छा यहाँ पे फर्स्ट टाइम ओके बस वही पूछ रहा हूँ सम यू नो व्हाट हैपेंस अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस फर्स्ट टाइम थिंग एंड देन आई एम लाइक इट्स देयर फर्स्ट टाइम इन लाइफ एंड दे आर लाइक नो इट्स एट हैबिटेट एंड आई वाज लाइक ओके सॉरी I didn't know we were playing these games where first time at Habitat, first time at Bandra, first time in like Khar. I'm sorry, I don't keep track. So like that's why it's better to ask. It's better to ask people saying कौन सा first time है तुम्हारा कि कौन सा scene है तुम्हारा बस वही scene था. But anyways, thank you for that. Okay, cool. Now I'll do a mock round, right? I will call a fictional person and you have to pretend like they're your best friend and clap and cheer for them. I just want to see where the energy is. Okay? Are you guys ready? Okay. Na. Okay, guys, you don't have to shout. Cool. So, now you set the bar high here. Huh? I didn't tell you set the bar. You set the bar. So now make sure for every person you keep it here. Okay, no matter who's coming on stage, first time, second time, 100th time, you will pretend like they're your best friend. We can pretend, right? Yeah? I love it, dude. So much confidence in it. Yeah, we'll pretend. उसमें क्या है? करते तो है. ठीक है. I'll call the first person. It's not a first time, but it's the first performer tonight, today afternoon, and that's going to start a nice tone and set of words being exchanged for the rest of the evening. So, are you excited to begin today's opening? Yeah. Okay. Start clapping. First person. Start clapping. Everyone. Together. First person. Come on. Can we please have Priyal? Keep clapping. Let's go. Yeah. I didn't know I'm the first person today. All right, thank you. Okay, before I begin, my trigger warning to all of you would be that आज एक टूटे हुए दिल के साथ आई हूँ और शायद सुनकर शायद अच्छा नहीं लगे, but I think I might feel a little better. So I'd just like to say that this time I'm going to be a little selfish and I'm going to recite for myself so that I just feel better and I go back home with probably a little less tears.
ये जो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है अभी काफ़ी फ्रेश है, मतलब समझो 1 महीना जितना हुआ है, बट ये कनेक्शन को भूलने में बहुत टाइम लगेगा. आई थिंक प्रॉब्ली मैनी ईयर्स एंड आई हैव टू प्रॉब्ली डील विद इट. सो अचानक से आई थॉट लाइक लेट मी थिंक अबाउट माई फर्स्ट हार्ट ब्रेक. आई मीन दिस शुड प्रॉब्ली बी माई लास्ट, प्लीज गॉड, but it's time that I think about my first heartbreak and those fresh feelings जो मैंने तब फील करी थी. So उसी पे मैंने लिखा था कुछ सालों पहले, and I'd like to just reiterate, and I can't find it but I will. Yeah. Okay, deep breath into yoga these days guys. हाँ, अनजाने में मैंने भी मोहब्बत की है. सालों पहले भी इश्क हुआ था, आज तक वहीं पर हक जमाए बैठी हूँ. तुम्हारे आफरीन चेहरे के नूर को आज भी मैं सजाए बैठी हूँ. एक तरफा प्यार की निशानियों में गुमशुदा अपने हिस्से के जुनून को मैं तुम पर लुटाए बैठी हूँ. अपना बनाकर शायद दिल में एक घर बनाए बैठी हूँ जिसकी कोई मंजिल नहीं. हाँ, मैंने भी बेहद मोहब्बत करी है, मैं भी बेहद मोहब्बत कर बैठी हूँ और वो तुमसे तय था. बीत गई रातें पर बातें पुरानी नहीं लगती. अपने एहसास को जताने की मुझे अब हर कोशिश बचकानी नहीं लगती. शायद खुद को भुलाकर तुम्हें याद रखना ही ठीक लगता है. तुमसे प्यार करके तुमसे अलग रहना ही ठीक लगता है. तुम्हें अपना कर भी तुमसे दूरी बनाए रखना ही ठीक लगता है. गुजरे हुए कल ने मेरे आज को खोखला बना दिया. गुजरे हुए कल ने मेरे आज को खोखला बना दिया. पर तुम्हारी मुस्कान ने कई दफ़ा मुझे एक नया एहसास दिया. लेकिन उस हर पल, हर एहसास, हर बात, हर दास्तान, हर तारीफ पर मैंने घुमा दिया अपना पिया. हैरानी होती है खुद के खालीपन में जो तुम्हें समेटने को राज़ी है. अपने सिलवटों को तोड़ तुम्हारे बिखरे ख्वाबों की जोड़ अपनी सोच में बरकरार रखना. हैरान हूँ ऐसे प्यार पर जो तुम्हारे प्यार को ठुकराने के लिए राजी है. आज तक चुप रहकर समझा शायद प्यार मुझे नहीं आता, पर मेरी जान अनजाने में प्यार के लिए ही मैंने चुप रहना सीख लिया. ना कुछ मांगने की खातिर, ना कुछ जताने की खातिर, बस तुम्हारी प्यारी आंखों की गहराइयों में मचलने के लालच में मैंने तुमसे दोस्ती निभाना सीख लिया. माँ को नहीं बताया, शायद हंस पड़ेंगी. दूसरों से काफ़ी छिपाया, शायद समझ नहीं पाएंगे. पर तुम्हें हर दम हर शब्द से वाकिफ़ कराया, पता नहीं क्यों. ए हम नवा, तुम सुनना नहीं चाहोगे, पर तुमने इस ख्वाबीदा को बड़ी मुश्किल से खुद से मिलवाया है. मैं पत्थर बन चुकी हूँ, कुछ चुपता नहीं. लेकिन तुम मुझे भूल जाओ, इससे बुरा मेरा और कोई सपना नहीं है. बेवजह गलतियाँ ही नहीं, बेनाम रिश्ते भी निभाए हैं, पर ये दिल तुम पर तय था. हाँ, मैं बेइंतहा मोहब्बत कर बैठी हूँ और वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे तय था. थैंक यू. Yeah, dude, yeah. Yes. Thank you. It's a very vulnerable piece, and I think you pouring your heart out really helps. Also, it helps identifying how many heartbroken people are there in a lot. I must say, a lot. You know, in between you can hear. It's just them stopping their tears to be like, enough, stop it. This is it. But thank you so much. Please keep doing this. Yeah. Cool. I'll call the next person. Next person's the first time performer. So, yeah, that's like code word for extra energy. Okay, cool. Are we excited? Yeah, okay. Can you please have Kanchi? Come on, guys. Let's go. Till she comes on stage. She's coming. फर्स्ट टाइम नेवर, कभी इससे पहले किसी को सुनाया
नया भी नहीं है, so this is again from a heartbreak. It's not that fresh. 2 साल हो गए, but अब तक दिल दुखता है. So मोहब्बत बहुत प्यारी सी चीज़ है ना. बस वो एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी कट जाती है. पर कभी किसी ने ऐसा इश्क किया है जो अधूरा रह गया हो? आप उनसे मोहब्बत तो करते हो पर वो आपके साथ नहीं है. वो फीलिंग कैसी लगती है? अधूरा इश्क ना सबसे खूबसूरत होता है. साथ होने की यादें भी होती हैं और फिर साथ आने की उम्मीद भी. साथ निभाने की कस्में भी होती हैं और उन वादों को पूरा करने का जज्बा भी. साथ निभाने का इंतहा की कहानियाँ भी और उन कहानियों को दोहराने का इंतज़ार भी. बस इसी ख्याल में रातें कटती हैं कि एक सवेरे उठकर उनसे फिर मुलाकात होगी. इसी चाहत में दिन बीतते हैं कि वो मुलाकात उस पहली वाली सी होगी. वही मुस्कुराना, वही शर्माना, वही खुशबू, वही शाम, वही नोक-झोंक, वही प्यार, बस वही पहली मुलाकात. प्यारा सा ख्वाब है. अधूरा इश्क एक जुनूनियत वाला जज्बात है. आँखों में आशा, दिल में निराशा, रूह को तड़पाने वाली भाषा. मोहब्बत से भी ज़्यादा मुश्किल. ये वो मुकाम है जो चाहकर भी नहीं होता हासिल. पर फिर भी अधूरा इश्क ना सबसे खूबसूरत होता है. उसे खोने का एहसास भी होता है और फिर से मिल जाए तो अपना बनाने का साहस भी. उस दर्द से वाकिफ़ होकर उसे फिर पाने की आस भी. उन टूटी रातों का गम भी, पर उन राहों को फिर अपनाने का दम भी. उन बेवक्त झगड़ों का खौफ भी, पर फिर से कोशिश करने का शौक़ भी. दिल तुड़वाने की आदत भी और उसी गुस्ताखी को फिर निभाने की इबादत भी. एक दूसरे से शिकायत भी, पर सब माफ़ कर दे वो आयत भी. कैसी चाहत है ये, झूठी सी दावत है ये. कामिल ना होने की सज़ा है ये, पर फिर भी इस दिल के धड़कने की वजह है ये. अधूरा इश्क ना गज़ब होता है, ना ईमान ना अदब होता है, पर फिर भी ये सबसे खूबसूरत होता है. Come on, first time. Thank you. Thank you so much for that. It was really amazing. Another new thing I've been noticing with people performing post-pandemic is that there is some crazy amount of confidence, okay? Because I started 5 years back, okay? And I had like a sheet of paper with me. And I was so scared that I constantly just kept doing this, okay? And now the problem is I have to also, I'm from theatre. Theatre में बोला जाता है, you have to make eye contact, right? So I'm trying to make eye contact, but the paper is also here. So I'm like, okay, I'll remove one hand. Fine, eye contact. I'll remove one more hand. And this went on for at least first 6 months of my performance because I couldn't read. So I would always like keep my book here and I'm just like, and then this happened, and then, okay, thank you. And then just walk away, right? So this is crazy. For the first time, it's like amazing. Yeah. It's crazy. Have you performed in life or do you perform anything, any other? Nothing else? I've never recited anything. No, not- to anybody. My close friends. Also. Okay, no, I'm saying any other form, art form, like dance ho gaya, ya theatre. You have not done stage in any form. Man, that's crazy, dude. That's whack. Wow. It's fine. It took me 5 years to build this, but yeah, fine. It's okay. People just walk in. Fine. I'll call the next person. I'll go and cry. Next person is also a first time performer, okay? So till the person walks on stage. I understand some people might come from behind and but till the person walks on stage, please clap. It really helps. It really, because it's like people are clapping for you, and the more closer you're getting to the stage, the more like the claps are like, okay. And you're like, but so it'll just be fun. Cool. Next person's the first time again, so you know what to do. Yeah, you know what to do. Can we please have Shivashish? First time performer, guys. First time. Go on. Hello, I'm Shivashish. I'm from Patna. So, दिल तो बहुत दुखा दिया. तो आज मैं सोचा हर कोई कुछ ना कुछ किसी के पीछे भाग रहा है. किसी का कोई लड़की के पीछे भाग रहा है. किसी का कोई अचीवमेंट है उसके पीछे भाग रहा है. तो उसके ऊपर लिखा है
जिसका परसेप्शन हो वो उसके ऊपर ले सकता है। Like, कभी सोचा है भाग रहे हो जिसके पीछे, अगर मिल जाए तो क्या करोगे? या जिसे तुम सुकून कहते हो उसे सुकून ही ना मिले तो क्या करोगे? करना था जिससे मोहब्बत का इजहार, ना कर पाओ तो क्या करोगे? रहना था जिसके संग ना रह सके तो क्या करोगे? ये रात ही आखिरी हुई तो क्या करोगे? हम ही ना रहे तो इस नाराज़गी का क्या करोगे? मान जाया करो अगर मनाने वाला ही ना रहे तो क्या करोगे? बस हो जाए ये रात आखिरी, यही दुआ करेंगे, यही दुआ करेंगे। There is another piece I've written for a person which is really close to my heart, my father. So, माँ के बारे में तो बहुत लोग लिखते हैं, आज पापा आपके लिए कुछ कहना चाहूँगा। माँ अगर जन्म देती है तो आप इस जन्म का मकसद देते हो। माँ अगर गोद में घुमाती है तो आप उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो। क्या हुआ पहला शब्द माँ बोला मैंने, प्यार तो आपसे भी किया है। बचपन से हमारे सारे शौक़ किए पूरे, हमारा खाना लाते रहे और अपनी थाली रखी अधूरे। उसके कपड़े फट जाएं तो सिलाता है वो, और तुम्हारे फट जाएं तो नए दिलाता है वो। 1 घंटे बाद वो घर में होते हैं जिस खिलौने को हम बाज़ार में छूते हैं। उसने अपनी खुशी के लिए सारी ज़िंदगी गुजारी है, और उसकी खुशी उसमें जिसमें खुशी तुम्हारी है। वो तुम्हारे कांटों को अपने हाथों से साफ करता है, वो कोई और नहीं कर सकता जो एक बाप करता है। अब जी करता है सब छोड़ लग जाऊं काम धंधे पर, अब बोझ अच्छा नहीं लगता पापा आपके कंधे पर। वो समझते हैं मैं नाकाबिल हूँ, सही समझते हैं, पर मैं भी काबिल बनूंगा ये भी वही समझते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत दौलत कमाऊंगा, पर अमीर बनूंगा जब पापा आपको गले लगाऊंगा। पापा बस मैं इतना काबिल बनना चाहता हूँ, माँ की गोद में तो बहुत सोया हूँ, एक बार आपकी गोद में सोना चाहता हूँ। सब लोग ब्रेकअप पे बोल रहे थे तो थोड़ा ये सेंटी हो गया, तो एक ब्रेकअप पे मैं भी बोल देता हूँ। इसका टाइटल है दर्द, द फीलिंग ऑफ पेन। अश्कों से यारी टूटे, लफ्ज़ों से नाते हैं, और वो हंसकर करते गहरों से बातें हैं। वक्त की बात थी जो वक्त के साथ गई, मेरी हाथों की लकीरें थाम उसका हाथ गई। सुना दो मेरा दर्द तो तुम्हें भी रोना आएगा, उसको होगी खबर पर वो ना आएगा। शख्स जो रहता था कभी मेरे दिल में, अब दिल लग रहा है उसका औरों की महफिल में। बारिश की बूंदों को अखियाँ तरसती हैं, मुझ पे तो पूरे सावन रेत ही बरसती है। सुना दो मेरा दर्द तो तुम्हें भी रोना आएगा, उसको होगी खबर पर वो ना आएगा। Thank you so much. Again, first time, man. Thank you. I get really excited again when first people who come for first time over and like kill it, but at the same time I'm like just please. It's a good thing. I'm supporting the art only, but. Whoever comes next, okay, please note, you have to do a piece on breakup now.
दिस इज अ जेंगा बन रहा है, ठीक है? 4 तो बन गए ब्लॉग्स, 4 ब्रेकअप हो गए. Because he started, no, he said at some point, I was like, maybe he's talking about love. Then he's like, नहीं, dad. I was like, चल ठीक है, हो गया. And then towards the end, आई गया वो. What is the name of your piece? Sorry, दर्द? The feeling of pain. Okay. I want to say something, but I just. Yeah, it looks like a title of a South Indian like dub movie. Dard. The feeling of pain. Yeah, it just sounds like Actually, I wrote it Sony Max. for a song. Oh, are you a songwriter? Songwriter, lyricist. But you've written songs. Have we heard any of songs that you've written? Like for what you write songs mainly? Like movies, web series, yeah. खुद के लिए या खुद के लिए. Okay. Have you released anything? कहाँ पे है ये सब अवेलेबल? YouTube पे. Okay. क्या है YouTube चैनल? शिवाशीष. Okay. पूरा नाम बता दो यार. शिवाशीष कुछ ऐसा. Okay. Cool. Please guys check his stuff out. Thank you 4 people for clapping. Now see others will do it. No. Don't. Only I'm telling them they did a good job. So I'll give you guys a trick, okay? I used to teach in a school, okay? And I used to work in this NGO called Teach for India. So they used to teach us this thing called positive reinforcement, which means when the naughty kids in my classroom are annoying us, right, from somewhere, I would look at a good set of children or people who are sitting quietly and should be disciplined in class and be like, wow, good job. The other kids are like, even I want a good job. So even I'll sit quiet now. So you guys did the same thing right now. And generally with audiences, I try doing this where I'm like, oh, okay, this, they did a good job by like sitting here or something. Other people are like, wait, what? Am I supposed to do something in this? So that's why I love it. Yeah, that's why. And the psychology of an audience when one person starts clapping and the other people are like, oh, I also have to clap now. Was I asked? I don't know, but I have to clap now. Okay, next person is also a first-time performer. Okay, we've had like first times in a row. You guys are doing amazing, great audience. Please keep that same energy going, okay? It really feels nice when the person comes and they get this kind of appreciation. Okay, so start clapping. Everyone. Can we please have Aditya? Right here, keep clapping till he comes to stage. हाय एवरीवन, मेरा नाम आदित्य है. ब्रेकअप पे बहुत बातें हो गई, प्यार पे होंगी, लेकिन उसके पहले मैंने एक स्टोरी टेलिंग लिखी थी शहर पे. और तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है कि काफ़ी लोग कितने लोग यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा कि जो 9 to 5 जॉब करते हैं. तो इस कविता का नाम, स्टोरी टेलिंग जो भी है, उसका नाम मैंने दिया है सुकून की तलाश. तो काफ़ी लोग जाते हैं 9 to 5, उनका रूटीन एक सेम ही रहता है. जाएंगे, घर पे आएंगे, खाना खा के सो जाएंगे, थोड़ी बहुत बातें होती हैं या फिर कभी कभी बाहर जाते हैं. तो मैंने उस पर लिखी है ये स्टोरी टेलिंग. मैंने इसके एक लड़का है अमन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से की है. तो मैं शुरू करता हूँ कि मैं अमन हूँ, एक नौकरी पेशा आदमी, और हर आदमी की तरह मैं भी अपनी नौकरी को सिर दर्द बताता हूँ. दिन के आखिर में जब जाता हूँ इन जंगल की ऊंचाइयों पर, बैठकर कुछ देर मैं खुद से मिलाता हूँ. इस भागदौड़ भरी दुनिया में मानो सुकून की तलाश में रहते हैं सब. शिकायतें ही होती हैं काम की, मेरे यार दोस्त मिलते हैं. सुबह उठो, काम पर जाओ, लौट कर आओ, खाना खाओ, थोड़ी बहुत बातें करो और फिर सो जाओ. इसी को जिंदगी कहते हैं ये. इस रोजाना की जिंदगी में ना जाने कौन सी हार जीत में लगे रहते हैं ये. मैं बैठता हूँ कुछ वक्त आकर इन पेड़ों के बीच, देखता हूँ इस गुजरते वक्त को, फिर सोचता हूँ कि ये वक्त तो आखिर सबको मिलता है ना, चाहे आसान हो या सख्त हो. मंदिर में बजते घंटियों की आवाज़, शादी में बजते शहनाइयों का हल्का सा एहसास आता है मेरे कानों तक. खेल कूद के शोर में जब ये बच्चे जोर से चिल्लाते हैं, गुजरते वक्त का अंदाजा मुझे ये दिलाते हैं. 8 बज गए हैं, अब मैं फिर से घर जाऊंगा. कल फिर से सुकून की तलाश में यहीं लौट आऊंगा. रोज की तरह
मुझे बस इस हवा का रुख बदलता मिलेगा। कल फिर से ये सूरज मुझे यहीं ढलता मिलेगा। ये था। और कितने लोग उस दौर के जब खत लिखे जाते थे, मतलब पोस्टमैन जब जाते थे, आप वहाँ पे जाते थे और खत ज़्यादा कोई दिख नहीं रहा। तो उस दौरान का वो जो दौर था, वो उस दौर में ना बहुत टाइम लगता था, 1 महीना या 2 महीने लगते थे खत आने के लिए। तो मैंने उस डाकिए, उस पोस्टमैन की नज़र से लिखी है कि लोगों तक अपनों के खत पहुँचाना, लोगों तक अपनों के खत पहुँचाना, वो दरवाजे पर ही उनका वो खत खोल पर मुस्कुराना देखा है मैंने। किसी की उम्मीद ख्वाहिश सपना बनकर आते हैं ये खत, किसी की कई दिनों से खोई मुस्कान साथ लेकर आते हैं ये खत, किसी के दिल की बात उनके दिए पते पर पहुंचाना और उस शख्स का वो प्यार भरा खत वहीं पर शर्माना देखा है मैंने। दूर तक संदेशा पहुंचाने के लिए लोग मुझसे उम्मीदें लगाया करते हैं, वो उनसे कितना प्यार करते हैं ये खत में लिखकर जताया। वैसे तो मैंने सच में एक भी खत खोलकर नहीं पढ़ा, वैसे तो मैंने सच में एक भी खत खोलकर नहीं पढ़ा। खत में क्या होगा ये देते वक्त उनके चेहरे ही बताया करते। खत पहुंचाने के लिए मैंने मेहनत दिन रात की, खत पहुंचाने के लिए मैंने मेहनत दिन रात की है, जो शायद कुछ महीनों से अधूरी रह गई थी। मैंने पूरी वो हर मुलाकात की है। जो खत उन्होंने दिए वो बाकायदा उनके पते पर पहुंचा कर आया हूँ। जो खत उन्होंने दिए वो बाकायदा उनके पते पर पहुंचा कर आया हूँ। किसी के खुशी का न्योता लाया हूँ तो किसी के जंग में शहीद होने की खबर लाया हूँ। किसी के खुशी का न्योता लाया हूँ तो किसी के जंग में शहीद होने की खबर लाया हूँ। किसी को खुशी से झूमते तो किसी को आंसुओं से खत भिगोते पाया हूँ। मैं डाकिया हूँ, उनका खत लाया। अब मेरे ख्याल से टाइमर गुजर चुका है, प्यार की बात करने के लिए बाकी नहीं है, लेकिन एक 2 लाइनर से मैं एंड करना चाहूँगा कि प्यार पर ये कि जो बातें दिल में दबाए बैठे हो उन्हें कब कहोगे, कि जो बातें दिल में दबाए बैठे हो उन्हें कब कहोगे, कि पिछले मुलाकात में कुछ बातें अधूरी सी रह गई थी, तुम फिर से चाय पे चलोगे।
ये रजत ने रिविजन कर दी शुरू से एंड तक about love and heartbreak and everything. But thank you so much, Rajat. It's always a pleasure listening to you. It's really, really nice. Yeah, dude, it's really nice. Yeah, if you want to clap, clap. If you want to clap. If you want to clap. Yes. I'll call the next person. That's also a first time performer. Okay. So keep the bar high, keep the energy high, and start clapping. Start clapping. Start clapping. Little more, little more. Can we please have Niranjan? Keep clap, keep clap, keep clap, keep clap. हेलो हाय एवरीवन भाई ने बहुत अच्छा स्टैंड अप किया. अभी कोई मेरे से पूछेगा तेरा बर्थ डेट क्या, मैं बोलूँगा इश्क के खेल में. इतना मुझे याद हो गया है. तो थैंक यू. एंड सो मैं दोनों एक्सट्रीम्स पे लेके जाऊंगा कि द प्रोसेस नॉट ऑफ हार्ट ब्रेक एंड उसके बाद थोड़ा एक फ्लर्टी भी है कुछ. तो फिर जब व्हेन वी लाइक समवन एंड व्हेन वी फॉल इन लव विद समवन, हमको कोई उसके दोष नहीं दिखा देता. ऐसा लगता है कृष्ण भगवान ने उसकी अलग से बैठ के रचना की है, सिर्फ हमारे लिए ही बना है. तो उसी के ऊपर एक पोएम है. मुझे सनफ्लावर बहुत पसंद है, बट मेरी पोएम का नाम है रॉटन सनफ्लावर. ओके. In this pretty broken world of ours, I fell in love with a few rotten sunflowers. They were still sunflowers, mind you. They had a bloom which might make your day, but they came with a lot of say. But to be or to not to be, that is the question. I knew my days in the garden were numbered, and the sunflower wouldn't want my shine. And the day of goodbye finally arrived, but the day of goodbye wasn't as peaceful as much as the adieus were followed by. Okay. Seasons passed, and I happened to lose my way back into garden. I saw the sunflower, hoping that it wouldn't be rotten anymore. But the sunflower was still rotten, and the more I looked at it, I realized how rotten it always was. The uneven surfaces it had, the foul smell it carried, the need to be lust over it had. I traced my steps back, and I returned home to water myself. I still pass by the garden sometimes, but I never bother to check how rotten or how fresh the sunflower is. So that's it. That was the first poem. Thank you. Next poem है जो कि sunflower rotten होने के बाद क्या होता है. We find a rose behind it, we find a चमेली behind it, and we again fall in love. तो थोड़ा flirty शेर है. And also I'm saying this at a time with being in love with this one person only. I'm not saying date twice, two people at the same time. Okay? घर पे मम्मी ने देख लिया तो ठीक है. कि इजाज़त है नाम है. मैं तुमसे थोड़ी दूर बैठा हूँ, मुझे तुम्हारी सांसें नापनी थी, तुम्हारे कंधे पे सिर रख दूँ क्या. कि ज़माना मेरे नाम के गुलछर्रे उड़ा रहा है, तुम मेरा हाथ पकड़ के भरे बाजार में झुमके खरीदने चलोगी क्या. कि ये मेरी हाथ की लकीरें बड़ी कर्कश सी हो गई है, तुम्हारे जुल्फों से हाथ फेर दूं क्या. मेरे दोस्त अपने प्रिय भाभी से मिलने के लिए बेचैन है, कहो तो उन्हें चुप कराने के लिए तुम्हारी सहेलियों का नंबर भेज दूं क्या. कि सजी है महफिले उदास गजलों से, दुख भरे शायरों से और लंबी लंबी कविताओं से. कि सजी है महफिले उदास गजलों से, दुख भरे शायरों से और लंबी लंबी कविताओं से. तुम उसी महफिल में एक सांस में दिमाग में घुलने वाला और दिल में उतरने वाला जाम बनोगी क्या. थैंक यू. And just a few short शायरीs that I have. My time is nearly up. Just few, 1 or 2, 3 liners. It's very short, just like the relationships I've been into, or the situationships. Okay. मोहब्बत में ठोकर खाए हम, फिर भी बाज ना आया हम. तुम्हें हमारी कमी महसूस हो, इतने भी पास ना आए हम. The second one. खुद में ही पूरा हूँ मैं, मुझे अधूरा मत समझ. खुद में ही पूरा हूँ मैं, मुझे अधूरा मत समझ. खुद को मेरी ख्वाहिश समझ, ज़रूरत नहीं ना समझ. The third and the last one. कुछ दूरियां तुम भी घटाओ,
कुछ दूरियां तुम भी घटाओ, हम थोड़े थक से गए हैं, ये एक रिश्ता है, इस रिश्ते की जिम्मेदारी तुम भी उठाओ. Thank you so much, you guys have been lovely. And just one final thing, can you just clap for Harsh? Like, this is the third time I'm being here and he's hosted like nearly so many times. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Now, can I request you again to clap for him also? I'm just grateful that I get to do this. It's really exciting. Some days I wake up and I have to ask my roommate to pinch me just to be like, this is the life I'm living. Yeah, yeah, some issues in my head. He spoke about flirting, he spoke about crush and a bunch of things, okay? I want to, and this is a genuine question I want to ask everyone, okay? Which I've been asking for a few years. I don't know how to flirt. Someone told me long back that flirting means giving compliment, right? So if I say, hey, that's a great t-shirt, I'm flirting with them. According to me, okay? If I say, hey, great hair, or like, hey, great spectacles, or like, hey, great like watch, right? I thought that was, because my friends never explained it well, and I never understood. And I've been around boys most of my life, like boys' school and then boys' college, right? So it didn't help, obviously. But so I really want to understand from people, if anyone can break it down, okay, what the fuck is flirting? Really? See, no one can break it down. I had a friend in boys' college who was like, अबे ऐसा बोला नहीं जाता है, अंदर से आ जाता है. बोले कहाँ से अंदर से आ रहा है? किसके अंदर से कहाँ से आ रहा है यार? मेरे को नहीं कोर्स. I tried taking mini courses, mini workshop, master classes in college, in degree college, and then people just like, nahi. In that one of the mini workshops, someone told me you should compliment someone. So I just kept complimenting. That's it. And I didn't know if someone was flirting back with me. So if they say something, I would just be like, oh, cool, thanks. You know, they'll be like, oh, you look nice in that thing. I'm like, oh, cool, nice, great. You also, yeah. She's like, okay, man, thanks. And honestly, if people ask me, people have asked me in open mics and stuff saying, how do you then go on dates and do what? I do this. I talk. That's all. That's all I do. I keep talking until one point the girl's like, okay, listen, I think we should. Yeah. Just take a break for like 2 minutes. And, you know, so, yeah, for those of you who know me, I talk a lot. So that's my only way. So I would just talk. So I don't know. Is anyone here who can tell me anything about it? Movie देखो मैं अभी 3 ओह अच्छा सीन मुझे लगा वो मूवी आया था ना To make her laugh, or maybe if you're able to like connect with somebody, I don't know, making them laugh and they're like happy with you, so that's also nice. Is it flirting? I thought that was a relationship for me, like, like, yeah, because you know we all are performers, right? So you will perform, even if you're not performing. So there are many moments where I have done all this like funny gimmicks and people have laughed, but then I can't be like, wow, I flirted today. I know. Like today, a lot of you laughed at things I said. Can it be justified as I was flirting with you guys? I know this is illogical. I know this is it is? Wow, man, 3 of them, okay. None of you are agreeing, 3 of them. ठीक है यार ये सब ही होता है मेरे को पॉइंट पे आओ ना यार तुम लोग बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो मैं अगले बंदे को बुला दूँ ठीक है हाँ दिल तो दिल से ज़्यादा मेरे को वक्त चाहिए यार वक्त देगा कोई मेरे को बस ये कुछ मतलब I genuinely said it was not even poetry I genuinely meant मेरे को टाइम चाहिए लाइफ में टाइम नहीं है ठीक है ये मोमेंट जब अंदर से आता है you guys are useless okay I'll call the next person we'll come back let's see where we can go from here okay I'll talk about my crush if you guys have crushes great if you don't then you're happy man good for you I'll call the next person okay are you guys excited yeah okay can we please have Ankit is coming guys from this Ankit is coming he's coming you guys are great clappers oh what a clap हेलो सो 2 पंक्तियों से स्टार्ट करूंगा ये 2 पंक्तियां उन दोस्तों के लिए है जिन लोगों ने
अपने सपनों के लिए घर छोड़ दिया। तो कुछ इस तरह से लिखा है, गौर फरमाइएगा कि फीके से सपने, आंसुओं से भीगी रात। फीके से सपने, आंसुओं से भीगी रात, सपनों का ये शहर, एक बस्ता और फुटपाथ। कुछ इसी तरह से सपनों के लिए दो पंक्तियां लिखी हैं। लिखा है, दुख देखे न सुख देखे, दुख देखे न सुख देखे, न देखे चार दीवारी। गौर फरमाइएगा, दुख देखे न सुख देखे, न देखे चार दीवारी, इन आँखों ने सपना देखा, न देखी दुनिया सारी। इसी तरीके से रंगों के ऊपर लिखा है। रंगों में मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है और उसी के ऊपर एक कविता लिखी है। बहुत थैंक यू भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत मेरा स्पेशल सबसे फेवरेट कविता यही है, तो आई होप यू ऑल्सो लाइक इट। तो लिखा है कि काली काली जुल्फ़े तेरी, काली हैं सब रातें, जहन बसेरा काला मंदिर, काली हैं सब यादें। क्या खोया क्या पाया हमने, बस काले से धागे, अंतर मन में बसता क्या है, काली काली बातें। काला दिल है, काले हम हैं, और काले हैं रास्ते, काले शिव हैं, काले कृष्ण हैं, सब काले के वास्ते। देख किसी को मन से निकली काली सी जिज्ञासा है, सफ़ेद आँख में सुंदर दिखती काली सी अभिलाषा है। काला सिर्फ मैल नहीं जो निकले शरीर के अंगों से, काला कोई खेल नहीं जो हो जाए सिर्फ खेलने से, काला कोई खेल नहीं जो हो जाए सिर्फ खेलने से। भाई को मैंने बोला था दैट मैं पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ, हर्ष भाई को। एक्चुअली में मैं मुंबई आया था 2018 में, और कुछ फैमिली इशू के वजह से वापस चले गया था, और यहाँ लौटने में मेरे को 6 साल लग गए। 6 साल से माइक के सामने नहीं गया। तो उसी के ऊपर लिखा है 2 लाइनें, गौर फरमाइएगा कि मैं लौट गया हूँ फिर से, अब वापस ना जाऊँगा। कि मैं लौट गया हूँ फिर से, अब वापस ना जाऊँगा, सपनों को तोल तराजू से, बस पूरा करता जाऊँगा, मैं लौट गया हूँ फिर से। Thank you so much. Come on, dude. Thank you. Very heartfelt and very real. मैं अभी बैंगलोर से हूँ, मैं बॉम्बे से नहीं हूँ, बट व्हेन आई मूव टू बॉम्बे आई यूज्ड टू थिंक द सिटी इज़ फॉर एवरीबडी, लाइक एवरीबडी। आई वाज लाइक सबके लिए काम है, सबके लिए जगह है, सबके लिए सब कुछ है। And then a lot of my roommates moved who moved in with me had to leave for whatever reason that didn't work out for them. And I had like a weird culture shock then, because I just imagined, because so many people have spoken about it, I was like, of course Bombay has something, of course. But then I realized it's not for everyone. And you know, like people's journeys are very different. And this especially, something like this is a very powerful story and a very one with hope. And I really hope कि अभी you get to be on stage and get to be around the mic as much as possible. So thank you for sharing that with us. It really means a lot. Since you guys were responding so much to heartbreak, I'm assuming everyone has been in a relationship. Is there anyone who has not been in a relationship till today? Never at all? Not okay. No situationship, none of these. Okay, cool. So 3 of you are there, never. Okay, I'm just shocked. That's all.
I'm just so. But everyone's had a crush in their life. Yeah. Did it work out for anybody? Any amount to work out for anybody? Any kind of crush? It did. What grade? Yeah, school में था ये. College first year, and you dated that person for a while. Okay, nice. Anyone else? One is all. Yeah, it worked. School or college? Started in school, Okay. went on to college, broke up, celebrating the pain. I didn't know he'll come back on full circle. I didn't know he'll address this like this. Shit. Okay. Thank you for sharing. Anyone else? I just look at you. तेरे को आँखों में भी बोल देना तो बोल दे. But do you? Any of you? No? 4 years? Okay. In school itself? More like 8. Okay. 4 to 8 years. Okay. It's a job you did. So, I mean, the first time I had a crush was obviously in school. I feel like the crush we have now is very tampered. It's not the same feelings you had when you were in school and the same butterflies and all. There's no butterflies anymore. There's only dust for obvious reasons. So I had so like I said, I was in a boys' school, and then my parents decided that it's high time my brother and I have more challenges in life. So they moved us to a co-ed school. And they're like, now figure out life, okay? I came back home, first day from school, I'm freaking out. My mom's like, what happened? And I'm like, did you know there existed a new species that talks, looks like you, is much more evolved than you? And mom's like, yeah, there are, just don't talk like this in school. No one's going to be friends with you if you go and tell, aren't you that creature that I've never seen? Get out, don't do this. So basically, so I had a crush, okay? So, like I told you, I was in Bangalore. I had the crush on this one person, and it didn't work out, okay? Like most people, it didn't work out. But the story goes that, and I'll go in fast forward because it's a very long story. Maybe some other day I'll sit down and listen to tell you. The first time I met her, it was like violins were playing around me. People playing violin around me. I could feel the breeze in my hair also because Bangalore is breezy. So I could feel the breeze, right? But that made me feel like, wow, movie chal raha hai. I'm looking at this person. My heart was beating very fast. And then it took me exactly 720 days to talk to her. I was doing math. I was trying to do 2 years into maths. But so 2 years, I didn't talk to her. 2 years later, I said first word, okay? You know when I spoke to her after that? 2 years after that. Okay? So now we're in 10th grade, and we're trying to talk, we're trying to get to know each other, and then her classmate came in between us, made some confusion, and she stopped talking to me. And that's when I made Tu Janana the best-selling song of the month, of the year. Dude, there is not a place in Bangalore I haven't heard that song in that whole 2 years, okay? And yeah, so every night I would listen to it every day. It's like loop. Like how Agar Tum Saath Ho came and everyone was like, bhai, loop pe sunna hai bas. Agar breakup nahi bhi hua, to you should feel like you had a breakup, right? It's like, so this song, so all this happened, okay? But this is not even the story, okay? The story comes much later in life because in the pandemic I'm sitting. But sorry, I'll continue. I'll finish that part. So we didn't talk. I heard Tu Jaane Na. Then we were in the same tuition in 12th grade. So we started talking. And I'm trying to express my feelings to her. And she's not really in the mood to listen. So I was like, you know what, I'll write it because what else do we know? So I was like, likh leta hu main. Pura book likh liya maine ki this is what I feel. Take it, keep the book. She's like, I can't keep it with me, so I'll give it to you 3 days later. I'll read and I'll give it to you 3 days later. My parents will get annoyed if they see the book. I was like, cool. She takes the book 3 days later. मेरा board exam चल रहा है, ठीक है? That is not freaky at all. These 3 days were freaky as fuck. Right? I suck at math. And I was not worried about math exam as much as I was calculating time and space and love in this. Because for 6 years I had known her now. And almost for 6 years I had a crush. And kind of summarize that into like a space where I'm like, this is what I feel for you. So 3 दिन बाद we met and she's like, actually I didn't get the time to read the book. Which is okay. People are busy, board exam, she's a good student, okay. That's fine. My problem was at the second line, where she was like, can you please summarize it for me? I know, right? And at that point, right, I was young. I didn't know better. So I didn't have that
self-respect. So I kind of narrated it to her until my best friend came and said, "You're not going to do this. This is ridiculous." And he took me out of there, okay? Now story ends there. But real story comes later in life where a full circle moment came when, so my birthday is on June 13th, okay? June 13th. Now in the pandemic, I'm sitting in my house on June 4th, okay? Scrolling Instagram. This crush's account shows up, right? And I feel like every time you see your crush, you remember yourself from that time in life. So I went back in time, I saw the crush. I was like, cool man, pandemic, she's fine, whatever, hope everything is okay with her. She started posting little regularly. She wouldn't post at all, she started posting regularly. I was like, होगा कुछ तो ठीक है अभी लोग फ्री है pandemic में post कर रहे हैं. 4th of June, I'm scrolling and I see a post, okay, which is of her wedding. I don't know what to say, not invite, but it was like a picture where they'd written details about her getting married, which is also okay. She's getting married. It was a little sad. Like the 6th grader in me was just sad ki shit doesn't work out for us. But good for you. That's not the problem. It said 9 days to go. So every year, I celebrate my birthday with their anniversary. Everything. And I'm like, this is the worst joke you could have ever played on me. Just because it didn't work out, you shouldn't do this, man. It was so bad. Because like I told you, I'm bad at math, right? So I saw 4th June, 9 days. I चले गया आगे. Then I'm like, oh no! This year's birthday sucks! And then she got married, guys. So, yeah, good for her. Yeah, everyone's crush. No, at some level, I'm assuming if people like, I mean, I'm 28. So anyone who's around my age, about 25, I'm assuming a lot of your crushes who you knew in school were married. There's something here. There's something I really want. Can I just guess? Because the parts at which you were laughing, I kind of picked it up on it. So one was something to do with having a crush for some 6-7 years or something like that. The high number. One is that something to do with marriage. Something to do with marriage and something else. I don't know. I'm missing some link over here. Do you want to complete it? All of our friends are basically getting married. Oh, friends. A couple of my exes got married. Like Yeah. two of them got married very recently. Yeah. One of them had a baby, so Yeah. we flipped. I feel you, man. Yeah. 2 of my exes have babies, okay? Let's not start. Today's Sunday, right? My therapy is in 2 days. I don't want to do this right now. It's fine. I'm good right now. Cool. But anyways, I just wanted to share that heartfelt moment that she got married on a wonderful day. I can't blame my parents and say should have made given birth to me some other day. Okay, anyways, I'll call the next person. Okay, you guys excited? Yeah? Okay. Can you please have Darsh? Keep clapping. Till they come to stage. Come on, a little more. Yeah. हेलो तो एक शायरी से शुरुआत करूँगा. इस गहरी सी रात में अपने कंधों पर सुलाओगी ना, कुछ बदला बदला सा है तुम बदल जाओगी ना. इस गहरी सी रात में अपने कंधों पर सुलाओगी ना, कुछ बदला बदला सा है तुम बदल जाओगी ना. आंखें भर आती है तुम्हें अपने पास ना देखूँ तो, आज नहीं तो कल नजर आओगी ना. एक दूसरी शायरी है. आपसे नज़र मिलके ही मैं डूब गया, आपको देख के ही मैं फिसल गया. हमें डूबना और फिसलना तो मंजूर था, हमें डूबना और फिसलना तो मंजूर था, पर शायद आपके प्यार में गिरना हमारा कसूर था. एक शरारती शेर लिखा है. हुआ यूँ कि प्यार हुआ था, हुआ यूँ कि प्यार हुआ था, देखते ही देखते बेकरार हुआ था. पास आने की कोशिश की पर कुछ गलती कर बैठा, तुम्हारी होने वाली भाभी से इनकार हुआ था. एक शेर है. हंसते हुए हमने उसे जाने दिया, दिल में आंसू बहाते हुए हमने उसे खो दिया. हंसते हुए हमने उसे जाने दिया, दिल में आंसू बहाते हुए हमने उसे खो दिया. अक्सर प्यार आधा ही रह जाता है ज़िंदगी में, अक्सर प्यार आधा ही रह जाता है ज़िंदगी में. हमने तो ज़िंदगी में प्यार पूरे होने का ख्वाब महसूस ही नहीं किया. एक पोएम लिखी थी मेरी एक्स के लिए. कैसी हो, मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो, उम्मीद यही करता हूँ जा हो ठीक हो. कई बार मन करता है कुछ पूछ लूँ, पर यार मेरा दिल हिम्मत नहीं करता है. काफ़ी बातें हैं जो तुमसे जाननी है, काफ़ी बातें हैं जो तुम्हें समझानी है. इसके लिए सही समय ढूंढ रहा हूँ, इस समय में खुद को ही खुद रो रहा हूँ. चलो अब अलविदा कहता हूँ,
लगता है काफ़ी कुछ बोल दिया। लिखता रहूँगा तुम्हें क्योंकि पता नहीं, पर एक सवाल का जवाब ज़रूर देना, कैसी हो? थैंक यू। Thank you so much. Thank you. The theme is set, I guess, for today. I'm not doing anything in it. The theme is actually set. But what I got an idea that we should have a book which compiles different people's story or poem about their ex. And obviously, you have a book. But the whole book is for your ex. Wow, dude, that's wow. It's a poetry book. It's published. Wow. Okay, so what is it called? It's a poetry book. It has 54 poems. Okay. I Okay. published it 2 years ago. Okay. And but is it when you said the X thing, are you saying that there are some poems for the X, or is it the whole book is? Some are for the ex and some are Okay. Okay. My whole show is about my ex, my crush. Ah, nice. तू भी बता दे details अभी थोड़ी देर शो का. इसका 1 second. Your book is available on Amazon. What's it called again? Sorry. feelings halfway. Feelings Halfway. Okay, if you guys are interested, please check it out. Yeah, yeah. Man, it's difficult to write a book. It's really difficult to write a book. Akshada, you now. What is your show? If you're going to do your show around, and when is It's it? gonna be most likely after your birthday because I come back on that day, June 30th. Nice. Cool. And so sometime in June, it's called Mera Pehla Pehla Pyar. It's about my first love and everything is about. She's doing a solo show. She's doing a 1 hour by herself. So yeah, that's very. So follow her for more updates about that. But it's very hard to write a book. Anyone else who's written a book here? Anyone else who's an attempt? Dhruv is there. Yes, Dhruv. Let's go. Yeah, so it's a collection of 10 short stories that I wrote between 2011 to 19. 2011 to 19. So Man, I wrote stories 8. in that Yeah, but 8 years. That's beautiful. Like. and I've arranged them in such a way that it kind of should depict my growth or evolution as a writer also. So the story that I wrote in 2011 Yeah. was the first story. Yeah. And the collection ends with the last story that I wrote in 2009. That's madness, dude. Yeah. The name. What's the name of the book? So the name of the book is And Then It Rained. It's available on Amazon. You can buy it. Lovely. Thank you so much for sharing. Yeah. You said yes? Okay. Is there anyone else? Did anyone else raise their hand? My show is also about my crush. वो तो आके कर लेना अभी. Oh shit. Truth be spilled. Okay. Cool. So yeah, it's difficult to write a book. When I was in 5th grade, when I started writing, when I was 10 years old, I started writing a book. I started from writing a book when I started writing, and because I was very scared as a child, very worried, very anxious, so I couldn't talk. And now it's become ulta. But so I would write a lot. When we were young, have any of you read Famous Five? All those books? Yeah, so I read those books and I got motivated and I was like, there needs to be a version of this, but more relatable, right? So I wrote a book, very original, guys, very original. It's called Hardy Boys from India. Okay? Not original at all. It's like people, location. So, and the only reason I wrote it is because in the stories of Hardy Boys and other stuff, they would say alley, lane. I'm like, गली रहता है dude हमारे यहाँ. मेरे को नहीं समझता है alley valley क्या होता है and who enters what happens, right? So I wrote like and very like names with alliteration like Rahul, Ram, Raj. Very generic. My first piece of writing. I'll never want to see it again. But yeah, and I used to think I could do that. I'm still in route of hoping to write a book, but this is great, whatever they've done. And at open mics also, you actually have people who come and written 2 books, 3 books, so it's really exciting. Anyone who wants to write is in the process of writing, thinking. You're already writing, or are you in the process of thinking it? You're already writing it? Lovely. Second poetry collection book. That's nice. Okay. Is it a story? Is it a book and poem or a Poetry collection. poetry collection? Okay. Okay. Cool, man. Good to know. Cool. We hope, as and when time comes, you guys come back again and tell us कि आगे book हाँ हो गया. ऐसे ही होता है. Yeah, with a lot of people, it's happened like that. People have mentioned books and 6 months later they have come with a physical copy saying I actually have a book, and so it's amazing to see that. So yeah, please keep doing that. It really helps. Cool. I'll call the next person. We have 5 to 6 people. Please keep the energy, and then we get to go home. Can we please have Dhruti?
Yeah. So this is something I've written in Hindi/Urdu for the first time. It is titled as Bagawat. It means rebel. आज शब की बात है, आज आंखें बंद हुई तो नींद ना आई, नम से थी यादें सामने, जख्म सी थी, दिल में कसक थी, सर पर भी जुनून था, रूह थी बेचैन, जहन में मेरे एक अजीब सी मुताजस्सिस थी. मुताजस्सिस इज क्यूरियोसिटी. मुश्किलें थी तमाम पर फिर भी मुस्कान कैसी थी सरेआम. अब छुपाए नहीं छुपती मेरे सिर्फ जीने की जुस्तजू. खामोश हूँ मुख्तलिफ नहीं, मुख्तलिफ इज़ डिफरेंट. इस्तिरार की आदत है ऐसी लगी, इसी में सुकून की खोज में हूँ. इस्तिरार इज़ रेस्टलेसनेस. ज़ख्मी हूँ पर महसूस नहीं होता. ए दिल किस कदर चोट खाया है कि लहू बहा तो दर्द नहीं होता. आराम सा लगता है. सोच सोच में एक झपकी लगी तो सुबह हुई. फिर वही काम, फिर वही तामझाम, फिर यहाँ भागने की. शराब से तो बुरी है लत लगी. इस दौड़ में कहीं रह ना जाऊं इसका है डर लगा. इस दौड़ में कहीं रह ना जाऊं इसका है डर लगा. घर होकर भी बेघर सा रहने लगा. कहीं थमने का मन किया, लगा अपने इस आलम में बेरंग में थोड़े से रंग भर लूं. सॉरी. किसी के लिए शायद किसी के लिए शायद अपने आप को वारूं. क्या खबर थी यहाँ किसी अपने ने बेरंग किया तो किसी पराये ने पूरा जहां वारा. ये अपनों से कैसे हैं दायरे जो ना मुझे दूर ले चलते हैं ना करीब आने देते हैं. ये कैसी दिलों की नफ़रत है या मैं कहूँ दिलों की मोहब्बत है. और कोई कहकर गया है प्यार जंग परिवार और दोस्ती में तो सब जायज़ है. ये हयात ने कैसी है चाल चली, अब सोचता हूँ कि क्या मेरा भी जीना जायज़ है. आज शब की बात है, आज आँख बंद हुई तो नींद आई. ना दिल में कसक थी ना सर पर जुनून था. एक सांस की बगावत ने फिर से शायद जीने की आस लाई. थैंक यू. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Cool. I will call the next person, and I'm very excited again for you guys to hear him. I've been performing around him with him for the last 5 years, and I'm very excited for all of you to hear it. So. Yeah. Come on. Can we please have Dhruv? Keep clapping. Till he comes on stage. Come on. अपने होस्ट हर्ष के लिए जोरदार तालियां बजा दो. And Harsh, is good to see you host always, man. We've seen each other always performers and पहले बड़ा शर्मीला लड़का था ये दरअसल. अब थोड़ा सा मतलब होस्टिंग कर करके. It's good to see you, man. Good to see you this way. और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आज की जो ऑडियंस है ये बहुत ही अच्छा सुनने वाली और शायरी को अप्रिशिएट करने वाली ऑडियंस है. सो आई एम रियली ग्लैड टू बी हियर. सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू यार. अच्छा आप लोग सुन रहे हैं. और तुमने किताब की भी बात अच्छी कर दी हर्ष. मैं तकरीबन 2-3 साल पहले के भूल ही गया था. अब इन्होंने जिक्र किया तो मुझे किताब भी याद आई. तो थोड़ा सा मैंने बता ही दिया था. बाकी आपका मन करे तो जाके पढ़िएगा ज़रूर. एंड इट हैज़ स्टोरीज फ्रॉम ऑल द जॉनर्स. मैं सारे जॉनर्स लिखता हूँ. साइंस फिक्शन इज़ माई फेवरेट, लेकिन उसमें कोई साइंस फिक्शन स्टोरी है नहीं unfortunately. But there's horror, there's mystery, there's drama, there's like different kinds of stories. Handpicked 10 stories. 10 साल लग गए लिखने के लिए टोटल. Anyway, तो मैं अच्छा ये दर्द दिल के इस जंगा को और तवील करते हैं और कुछ एक मतलब और चंद शेर आप लोगों के ये सुनिएगा कि है रिश्ता यही बाकी निभाने के लिए, है रिश्ता यही बाकी निभाने के लिए, तुझे हम याद करते हैं भुलाने के लिए. है रिश्ता शुक्रिया. है रिश्ता यही बाकी निभाने के लिए, तुझे हम याद करते हैं भुलाने के लिए. कांटों को पहना गुल को पाने के लिए, कांटों को पहना गुल को पाने के लिए,
मिट गए हम तुझ तक आने के लिए। कांटों को पहना गुल को पाने के लिए, मिट गए हम तुझ तक आने के लिए। मेरा कमरा मेरा बिस्तर है दोनों जानते। और फरमाइएगा कि मेरा कमरा मेरा बिस्तर है दोनों जानते, मैं खाली मुस्कुराता हूँ जमाने के लिए। शुक्रिया। मेरा कमरा मेरा बिस्तर है दोनों जानते, मैं खाली मुस्कुराता हूँ जमाने के लिए। और चुपके से एक कोयल खंडहर देख के, चुपके से एक कोयल खंडहर देख के खिड़की पे आ बैठी थी गाने के लिए। चुपके से एक कोयल खंडहर देख के खिड़की पे आ बैठी थी गाने के लिए। बैठे रहे बस स्टॉप पर यही सोचकर, बैठे रहे बस स्टॉप पर यही सोचकर, वो आएगा हमको बुलाने के लिए। शुक्रिया। बैठे रहे बस स्टॉप पर यही सोचकर, वो आएगा हमको बुलाने के लिए। और ये आखिरी शेर सुनिएगा कि एक पल में जो लगी थी उन्हें देख के, एक पल में जो लगी थी उन्हें देख के, एक उम्र लगेगी वो बुझाने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एक और अब क्या सुनाया जाए आप लोगों को, मतलब हाँ ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। चलिए एक छोटी सी नज़्म से मैं अंत करता हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश, एक सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, फोटॉन के बारे में नज़्म, ठीक है। तो इस नज़्म का उन्वान भी लाजिम सी बात है, फोटॉन ही होगा, है ना। तो उसे क़यामत का डर नहीं है, खुद की कोई खबर नहीं है, वो रोशनी का सरमाया है पर उसका कोई घर नहीं है। न रंजो रश्क है कोई, न इश्को इख्तिलात है कोई, एक दिन है जिसकी न रात है कोई, यहाँ बदला कोई मंजर नहीं है। या तो सफर है लंबा या सफर नहीं है, एक दोहरी जिंदगी है जिसकी डगर नहीं है। बसर है यहाँ फिर भी बसर नहीं है, जिस पर गम और खुशी का असर नहीं है। वो खामोश है उजालों के मौन की तरह, लाइट बल्ब से छूटे एक फोटोन की तरह। शुक्रिया। Madness. Come on. Just 3 people. And you're going to go home. Yeah? Are you happy about that? Yeah? Rude. तू खुद ही performer है. Okay. 3 more people left, okay? For a second I forgot who I'm going to call. Now I remembered. Okay, cool. Start. Come on. Can we please have Akshara? Hey, till she comes on stage. Thank you, Harsh. Please give it up for the Habitat team, guys. You know, अभी ध्रुव ने बात की and like वो होता है मेरा major, like my master's major is photonics. So it just comes back, oh, I was that person, like in a whole another universe. But coming to the poem today that I'm gonna recite, it's very raw. I don't know what happens. Arsh is always there. These guys are always there when I'm gonna do a new piece, and I'm super nervous about it. I guess for support. So this is a new piece. It's very raw. It's about that, and I'm sorry to break the Jenga, but it's not about heartbreak. So it's about finding yourself, and it's that relationship with yourself. एंड बड़े होते होते स्पेशली आजकल की लाइफ में हम कैसे बचपने को भूल जाते हैं एंड ज़िंदगी में छोटी खुशियाँ जो दूसरों से नहीं आती है वो कितनी ज़रूरी होती है. सो दिस इज़ माई जर्नी of finding that through dance. Anybody who follows me on Instagram knows that I go to a lot of dance classes and there's a lots of dance reels, Insta reels, which people can hate me for, but that's what I find happiness in. So this is about finding happiness through that. बड़े होते होते कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई मैं. बचपना कब खो गया ये शायद मुझे तो या शायद कभी मुझे मिला ही नहीं. बचपन में बचपना करने का मौका बड़े नसीब वालों को मिलता है और कुछ मुझ जैसे होते हैं जिन्हें बचपन में न जाने अनजाने बड़ा होना पड़ता है. अक्सर लोगों के पास बक्से भर के यादें होती है बचपन की, शरारतों की और खुराफातों की.
बेवकूफ़ियों से भरी कहानियों की, पर मेरे पास तो वो था ही नहीं। वो बक्सा एक ऐसे दौर का जहाँ नासमझी का कोई परिणाम नहीं होता। मैंने हर नासमझी की मूल से भी ज़्यादा ब्याज लौटाया है। मैंने हर नासमझी का मूल से भी ज़्यादा ब्याज लौटाया है। तो बचपन का बचपना बस यूं ही हाथ से छूट गया और मुझे पता ही नहीं चला। क्या बात है। सपना देखना, लड़खड़ाना कभी सीखा ही नहीं, तो पूरा बदन कदम कदम फूंक कर रख कर अकड़ सा गया था। जिंदगी भी उस अकड़ में जैसे जकड़ गई। जिंदगी ठहर गई, हिलना तक मुश्किल हो गया था। आंखें टप टप आंसू बरसाती रही। मुझे मेरी माँ हमेशा बताती थी कि जब मैं छोटी थी ना, तो कभी कोई गाना बजता था तो मैं साथ में हमेशा थिरकने लगती थी। बिस्तर पर पड़े पड़े रेडियो पर ऐसा ही एक गाना आया, जिसने उस बच्चे को लगाम पकड़ा दी जो गाने सुनकर हिलने डुलने लगता था। नाचने वाले भी क्या नाचते हैं, उनको देखकर उन जैसे हिलने की ख्वाहिश वापस आ गई। मृत जिंदगी में जैसे धड़कन वापस आ गई। रोज सुबह उठने की हिम्मत इसी बात से आती थी कि एक नए गाने पे एक अल्ट्रा कूल कोरियोग्राफी मुझसे जो नहीं होगी वो करने की कोशिश करनी है। और कतरा कतरा इस शरीर ने भी ढील देनी शुरू कर दी। मन की बचकानी फरमाइशें पूरी करते करते बचपना वापस आ गया था। तो सही गलत से फर्क थोड़ी ना पड़ता था, मुझे तो बस नाचना था। क्या बात है। लोग दुनिया को भुलाकर नाचते हैं। नाचते नाचते मैं दुनिया भूल गई वो दुनिया को, जहाँ वो दुनिया के रीति रिवाजों को, वो दुनिया की भागम भाग को। अब मेरी दुनिया मुझ में समा गई। धीरे धीरे अकड़े जकड़े बदन को पहली बार गिरना सिखा रही हूँ, गलती करना सिखा रही हूँ। बड़प्पन में पहली बार अपना बचपन जीने की कोशिश कर रही हूँ। वन गाना एट अ टाइम, वन नृत्य एट अ टाइम। थैंक यू। Thank you so much. It was so heartfelt, so vulnerable. Thank you so much. Thank you so much for sharing that. I wish I wish I had this skill, man. My best friend has been a dancer for like, I know him for like 15 years. He's been a dancer, and maybe around him I can dance because I start becoming critical. I'm like, I suck at dancing. He's like, no, you don't. Just dance, it's fine. And whatever I do, he's like, wow, that's great. So I never know if it's right or not. So I want that kind of confidence. The only time I have confidence while dancing is when I'm doing Garba. Yeah. Did I not mention? Okay, I'm Guju. Okay, I'm Gujarati and I'm also Jain, higher version. Yeah, we are underground vegetable warriors. So in our annual Olympic retreat of Navratri every year, I like to participate and perform, and that's the only time I'm confident. With this much lights on my face, I'm okay. But if it's like the only other dancing I know in Bombay because of people I've met is the club dancing, where I want the lights to be 10% of this. Like people should not even be able to see each other. That's where I'll be like cool at dance now. There also I'll do Garba only mostly. But I like doing that. Okay, you know, like how I said I suck at math, and how I told you that there are 3 performers left. There are still 3 performers left. So keep the energy going. Okay, just 3 people. Okay, and then yeah. Thank you. A little more. Can we please have Jaydeep? Come on. Such a amazing location. Am I audible? Yeah. And such a beautiful host, Harsh. Can you a big round of applause for that? Okay. नमस्ते, मेरा नाम है जयदीप. पेशे से मैं इंश्योरेंस एक्सपर्ट हूँ, लेकिन दिल से मैं कविताएं लिखता हूँ. आधी अधूरी ही सही, टूटी फूटी ही सही, लेकिन दिल से मैं कविताएं लिखता हूँ. तो चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी आधी अधूरी सी कविता उस बचपन के बारे में जो बीत चुका है, लेकिन एक पूरी कहानी उस बचपने के बारे में जो आज भी जिंदा है.
बहुत प्यार से सुनिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि इस बचपन की तरह मेरी ये कविता भी बहुत मासूम है। याद है बचपन में कैसे दौड़ के छत पे भीगने चले जाया करते थे। ना कपड़े गीले होने का डर था, ना जुकाम होने का, लेकिन आज कुछ सोचना पड़ता है। कहीं भीग कर बीमार पड़ गए तो अगले दिन ऑफिस से सिक लीव ना लेनी पड़े। याद है बचपन में एक शाम भी हुआ करती थी, बचपन में एक खेलने कूदने वाली शाम भी हुआ करती थी, लेकिन आज दफ्तर से जब घर लौटते हैं ना तो सुबह से सीधी रात होती है। माना परदेश घुमाए हो, माना हवाई जहाज में बैठ के परदेश भी घुमाए हो, लेकिन दुनिया तो बचपन में पापा के कंधों पे ही बैठ के देखी थी ना। बचपन में स्कूल का बैग भले कितना ही भारी लगता था, बचपन में स्कूल का बैग भले कितना ही भारी लगता था, लेकिन आज ईएमआई के हफ्तों का बोझ उससे कहीं ज़्यादा लगता है। बचपन में ना अगर कोई चीज़ चौंका देती थी तो हम उसे मैजिक मान लेते थे। बचपन में अगर कोई चीज़ चौंका देती थी तो हम उसे मैजिक मान लेते थे। आज ज़रा से मैच्योर क्या हो गए, कुदरत की करामत में भी लॉजिक ढूंढने बैठ जाते हैं। माना सारी वेब सीरीज देखी, माना नेटफ्लिक्स पे सारी की सारी वेब सीरीज बिंज वॉच कर ली, लेकिन मज़ा तो वो कार्टून देखने में आता था जहाँ टॉम और जेरी लड़ते भी उतनी शिद्दत से थे और दोस्ती भी उतनी ही शिद्दत से निभाते थे। बचपन में ना फैंटम सिगरेट की एक कश लगाते ही जिंदगी जीने का नशा चढ़ जाता है। बचपन में फैंटम सिगरेट की एक कश लगाते ही जिंदगी जीने का नशा चढ़ जाता था, लेकिन आज देर रात तक पैग पे पैग लगाने पड़ते उसी जिंदगी का नशा उतारने के लिए। बचपन में ना पहचान सिर्फ 3 चीजों से होती थी, बचपन में पहचान सिर्फ 3 चीजों से होती थी, नए कपड़े, पुराने दोस्त और पोकेमॉन के कार्ड्स। लेकिन आज सेल्फ वैलिडेशन के लिए लाइक्स, फॉलोअर्स और कनेक्शंस की गिनती करनी पड़ती है। लेकिन कुछ बातें हैं जो बस वैसी की वैसी ही है जैसे बचपन में हुआ करती थी। आज भी जब टूटे हुए गुल्लक से कुछ फटे पुराने नोट निकल आते हैं ना तो वो अंबानी वाली अमीरों की फीलिंग आती है। आज भी जब देर रात को थक कर घर लौटते हैं ना तो माँ बड़े प्यार से वही सवाल पूछती है, बेटे तूने खाना खाया? शायद जगजीत सिंह जी ने सही कहा था, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। एक नया पीस लिखा है मैंने, ख़त्म ही नहीं हो रहा है 1 महीने से, तो मैंने सोचा अभी बोल ही दूँ। इसका नाम है कब आखिरी बार। It was based out of a little frustration of not doing simple things in life because you're based out of a city like Bombay. कब आखिरी बार एक फूल को खिलते देखा था, कब आखिरी बार एक फूल को खिलते देखा था, कब आखिरी बार पेड़ से फल को तोड़ा था, कब आखिरी बार खुले आसमान के नीचे सोए थे, कब आखिरी बार चांद सितारों को चमकते देखा था, कब आखिरी बार जी भरकर खूब रोए थे, कब आखिरी बार जी भरकर खुद को हंसाया था, कब आखिरी बार माँ बाप को गले लगाया था, कब आखिरी बार खुद से खुद को प्यार करना सिखाया था, कब आखिरी बार नदी किनारे सूरज को डूबते देखा था, कब आखिरी बार उगते सूरज की किरणों से आंख तुमने मिलाई थी। माना बड़ी भागदौड़ वाली ज़िंदगी है बम्बई की, माना बड़ी भागदौड़ वाली ज़िंदगी है बम्बई की, लेकिन कब आखिरी बार एक पल ठहर कर वक्त को गुजरते देखा था। थैंक यू। Thank you so much. Can we please come on? Two more people this time, not fucking with you. But like whatever you said, whatever you threw light on, I think it's like wow. It was a real moment for me. I think whatever you said, and it reminds me of a lot of things. But the first thing it reminds me of is birthdays. Is there anyone here? Okay, I consider all of you guys adults, no matter what age difference we have. How many of you still get excited for your own birthday? 1, 2, 3, 4, 5. 5 people in 40. You can see how. I'm just saying, like, so you can see where the balance is, right? Because I think I used to be very excited when I was young, and I didn't mind eating samosa, chips, and cake and fruity for you know, like the meal that I can finish in like 7 to 10 minutes. But that meal would go on for 30 minutes because you'll eat one chip, one bite of the cake, little by little, right?
And now I feel like even if I do fancy dinners, it's not there. I can spend a lot, like he said, I've spent a lot of money going, because that's what happens when you become adult. All your friends are like, let's go dinner. Let's go have lunch. Let's go to a nice place. And like, and the conversations are like adult conversations are about what you're doing in life. It's not about random things that were there in your life. And yeah, so I think it is a very real moment. But I do get fascinated every time I have to ask how many people do like celebrating their birthdays or are very excited. And it's always, the number is always less. I really want to know why, like in life. So I'm going to figure out eventually. But thank you for that. It really made me think a lot and will continue to make me think a lot. Okay, last two people. The next person coming, he had his show yesterday. We already spoke about that. Yeah. So now, yeah. Can we please have Arsh? Hey, come on. Last second person. Hi. You guys still alive? Very much into poetry still, very much into heartbreak still. आप कॉल करने वाले हो अपने एक्स को अभी? मेरे से गलती हो गई. मैं चूतिया था, ले लो बेबी. लेकिन 3 महीने के लिए मुझे कंटेंट चाहिए. नहीं यार, मैं वही करता था. I used to also, whenever if a girl came up to me, one of my exes and said, "Hi, I miss you." I'm like, हाँ ठीक है, 2 महीने में दिल तोड़. मुझे एक दूसरा सोलो निकालना है. But guys, round of applause for Harsh. Yeah, he was kind enough. So I had my first ever solo show here yesterday. It was titled Kya Pata Kal Ho Na Ho, and it was a great show, and Harsh opened for me. हाँ किसने बोला था? खत्म कर ले बात भाई, कोई टेंशन नहीं. हो गया? स्पीकर पे रख के बात कर रहा था ऐसे. हो गया? All anything in urgent? सब ठीक? एक्स का कॉल आया? प्रपोज कर रहा है? चल ठीक है. So the poem, I'm going to keep it very short. The poem that I have for you guys, I've performed it multiple times, but थोड़ा रिकॉर्ड हो रहा है, तो थोड़ा रील ट्रेंड हो रहा है आजकल, तो हम भी रील डालेंगे. तो आप लोग अगर अच्छे लगे, so I'm doing an English piece, so if you guys like it, just snap. If you guys like any line, just snap. Keep snapping. And because रिकॉर्ड हो रहा है तो थोड़ा और एनर्जी साथ. Even if you don't like it, ऐसे ही कर देना. मेरा इंस्टाग्राम चल जाएगा. पैसे तो नहीं, लेकिन वैलिडेशन तो दे ही दूंगा आपको. So this poem is titled A Missed Connection. It's basically, how many of you guys have had that feeling where you want to tell something to someone, or you want to say the way you feel? It could be anything. It could be platonic, it could be romantic, it could be professional, it could be in any sort, but you're kind of afraid to take that step because you're afraid that they might not understand. Right? They're afraid that they might not respond the way you might want them to. So it's on that. I was hoping to let her know how I felt as she waved goodbye, hugging and kissing everyone, just waiting to get on that airplane and fly. She wanted to go chase her dreams and had nothing to hide. Not knowing when I would see her next killed me inside. I stood there helplessly watching her check her bags and wondering what could have changed if I just had the courage, what could have been. As she moved past each checkpoint, her memories kept flashing in front of my eyes. I had to keep the silent heart beating before it breaks down and cries. Things change, people leave, and there's nothing we can do. But if you want to say something, say it before it gets too late, or you'll lose that too. Don't wait around for the perfect moment, because that's just a fantasy. We have to make each moment perfect to understand its gravity. Thank you. Honestly, you'll see her face everywhere you go, in every reflection. So don't wait before she gets on some flight, or it'll simply be a missed connection. Thank you very much. My name is Arsh Malhotra. Please welcome back on stage, Harsha. Keep it going until he comes on stage, guys. All right. Can we, sorry, but yeah. Okay. Before I call the last person, I want to make a small, very, very small announcement.
We started this property 6 months ago called Creative Block Party. I don't know if you guys have seen it, heard it, seen it on Instagram, anywhere close to it. First of all, we have a page called Creative Block Party. The block is BLOC. There's no K in it. Don't ask us why. We just found it cool in that moment, and we were in a rush. We were like, "हाँ ये सही लग रहा है, let's just do it." And it fell through. It was like, "Yeah, this sounds really nice." So Creative Block Party is our way to get poets, storytellers, different kinds of acts or artists to come and experiment and explore and engage with an audience, right? Though all of those shows are free to attend, all you have to do is just RSVP. But this month, since we've done 6-7 months of it, this month on the May 21st, it's a Sunday, we're having our first ticketed show. So, yeah. We have two types of shows, okay? One is Mushaira and one is a lineup. A lineup is just basically a bunch of different artists who come together. Mushaira, how many of you seen Mushaira, even online, heard of it? Yeah. So we try to create a similar setup. We really try hard to create a similar vibe, a similar setup with same energy. So this 21st, we have our first ever ticketed show. We also have our other show where you can RSVP, and that's on 24th. But I would really, really urge you to buy tickets for it. I think they're kind of almost live, but stay posted through our pages like Habitat or Creative Block Party, and you'll get all the updates on that. Like you came today, like you showed up, whether you were performing or not, please do. It really, really, really helps. How many of you are just audience members? Can you raise your hand? Audience members, raise your hand. Okay, can we all please clap for them? Thank you. Thank you for coming, because we could do this to each other all day. But if you guys are not here to listen, it really adds so much more value since you guys are here. So yes, and thank you for being an amazing audience, performer, people, to be so supportive and nice. Another thing is, to get a slot in poetry, there is only one way, is you have to say yes on the post, okay? मुझे मैसेज करके कुछ नहीं होगा, टीम को मैसेज करके कुछ नहीं होगा. Also, we know why, because we have a team, okay? We have a team, we call them Illuminati. They're somewhere. We don't know where they are, right? They send us a list of 10 or 12 Instagram IDs, and you can't question them back. So we take the 10, 12 names and we send them a message and say, please come, right? So yes is the only way you get a slot. Not messaging anybody, not trying anything, because we can't, okay? Second, again, I told you, photo, we have a live stream. It's on our channel. Please, you can watch it out. Photos you'll get in your DM from Instagram within a week. Please keep attending more shows at Habitat. We have shows. We have 2 shows almost every... No, we have 2 shows every day. Maybe more than 2 sometimes, but 2 almost every day, right? Okay, cool. Done. I'll call the last person now. And you guys have to throw your energy like you... Yeah. Can we please have Nalini? प्लीज हर्ष के लिए तालियां बजाइए. And I'm very serious. Please go and watch the show Creative Block Party, because जो एक्सपीरियंस वहाँ पे होता है, सारे ही है जो शायरी को पसंद करने वाले लोग आते हैं, and then you're gonna have a lot of fun. So please just attend. हमेशा की तरह मुझे याद नहीं है, और इस बार मुझे याद भी नहीं है. So एक छोटी सी कविता मैंने अपने प्रिविलेज पर लिखी है. कुम्हार मिट्टी को छूकर बताता है उसकी गुणवत्ता, किसान मिट्टी को चख कर कहता है उसे उपजाओ, जवान मिट्टी में मिलकर चुकाता है मिट्टी का कर्ज. तुम पानी में खिलकर नलिनी, क्या जानोगे मिट्टी का स्वाद. हाँ, एक और. तुम्हारे बाद एक समूचे जगत का प्रेम मुझे कम पड़ेगा. तुम्हारे बाद जो मेरा हाथ थामेगा वो बस हड्डी थामेगा. तुम्हारे बाद जो मुझसे प्रेम करेगा तुमसे रोष करेगा. तुम्हारे बाद प्रेम पर दोष पड़ेगा. थैंक यू. आखिरी कविता कुछ याद ही नहीं आ रहा है, दिमाग इतना खाली हो गया मेरा. चलो एक ब्रेकअप पोइट्री सुना देती हूँ आपको. जी बिल्कुल. कब से यहाँ चैन आया नहीं, मैंने भी उसको बुलाया नहीं. बेचैन होकर बिताया ये मौसम, गया जो वो वापस फिर आया नहीं. मैंने भी उसको बुलाया नहीं. सुना गीत गाते हुए रात को,
सुना बस सुना गुनगुनाया नहीं, बेचैन होकर बिताया ये मौसम कि गीतों का मौसम फिर आया नहीं, मैंने भी उसको बुलाया नहीं। किया इश्क रोया जिया इश्क बस, निभाया निभाया जताया नहीं, बेचैन होकर बिताया ये मौसम कि रोने का मौसम फिर आया नहीं, मैंने भी उसको बुलाया नहीं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Nalini. I know I've asked you to clap a lot. One, it's in my JD that I'm supposed to do this. Second, I'm sorry, but this is how it works. If this would not happen, I felt like the energy for everybody would have not been the same. So we still have 3 performers. I thought this is the, yeah, okay, cool. They got it first and then none of you like reacted, so I'm like, chill, fuck it. Okay, so like I've told you all the information regarding that, right? Right as soon as we finish the event, I request all the performers to come on stage for a group photo. Apart from that, keep doing what you do, it really matters. Keep creating art. Thank you so much for being here today. You guys are an amazing audience. My name is Harsh. I will see you guys soon. Bye.